नियमित करना और सभी नागरिकों के लिए दंत स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग विधेयक 2023 को 1948 के दंत चिकित्सक अधिनियम को रद्द करने के इरादे से संसद में पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य जहां डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रद्द करना और राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग एनडीसी को एक अलग कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित करना है, जो देश भर में दंत चिकित्सक शिक्षा और पेशेवरों की पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की कमियों को दूर करना और वर्तमान कानून के भीतर प्रचलित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एनडीसी की शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की शुरुआत करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। मोदी सरकार ने लगातार निवारक दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। विशेष रूप से एनएचपी 2017 दंत स्वास्थ्य के महत्व को संबोधित करने वाली पहली व्यापक स्वास्थ्य नीति थी, जिसे पहले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समग्र विकास पर जोर देते रहे हैं। यह विधेयक स्वायत्त निकायों की स्थापना करके और बहुस्तरीय प्रणाली के माध्यम से एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही करने का प्रयास करता है। इससे सभी शिकायतों के त्वरित समाधान में हमें सहायता मिलेगी। हालांकि भारत की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दंत स्वास्थ्य की अक्सर उपेक्षा की जाती है, लेकिन सरकार ने इसके महत्व को पहचाना है। 2019 की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत कार्यक्रम में दंत स्वास्थ्य देखभाल शामिल थी और व्यक्तियों को अपने दंत स्वास्थ्य की प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बजटीय आवंटन के संदर्भ में जबकि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 33,238 करोड़ आवंटित किए थे, मोदी सरकार ने इसे 2023-24 के लिए 86,175 करोड़ तक बढ़ा दिया, जो यूपीए की तुलना में लगभग 159% अधिक आवंटन है। मोदी सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के प्रतिस्थापन के रूप में एनएमसी की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा योग अधिनियम 2019 लागू किया। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत एनएमसी ने पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। एमसीआई को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी के मुद्दों का सामना करना जो पड़ता था, जो कई दशकों में यूपीए के शासन के दौरान बदतर हो गया। इसी तरह एनडीसी विधेयक का लक्ष्य दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में समान परिवर्तन लाना है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के उपेक्षित क्षेत्रों को संबोधित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके प्रयासों में स्पष्ट है। 2022 की बजट प्रस्तुति में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पहल के लिए धन आवंटित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को 24 आवर्स की सुविधा प्रदान करता है। दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान भी आश्चर्यजनक नहीं है। जहां पिछली यूपीए सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य की उपेक्षा की, वहीं मोदी सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार अतिरिक्त प्रयास कर रही है। मोदी सरकार विभिन्न स्तरों पर डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दंत चिकित्सकों के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों को डिजिटलीकरण करके धोखाधड़ी प्रथाओं की घटना को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य नियमित निगरानी
और एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से दंत चिकित्सा क्षेत्र में सभी गड़बड़ियों को खत्म करना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कई डेलीगेशन जो दंत व्यवसाय से जुड़े हैं उनकी कई मांगें थी, वो जब ये बिल आज सदन में पास हो जाएगा उनका भी समाधान होगा। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि बिल का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एस निरंजन रेड्डी। Madam Vice Chairperson, I rise to support both the bills, which is the Dental Commission Bill and the Nursing and Midwifery Commission Bill. If I may first speak on the Nursing and Midwifery Commission Bill, the reason I support the bill is because the legislation, Madam, as I see it, is both fluid and modern looking. I say this because the legislation looks ahead. It also looks across other enactments when it is making provisions under this Act. Madam, when I say it looks ahead, Clause 10 specifically requires, the Act requires the Commission, when it is conducting its affairs, to ensure that this nursing industry would be subjected to cutting-edge technology and hybrid education requirements, so that the Commission will now ensure that the curriculum will have this. It also very importantly provides for certain soft skills development also to be taken into account. Now this is very important, Madam, because in the modern age of artificial intelligence, one kind of jobs that can never be changed are jobs like nursing and midwifery, because no artificial intelligence can do this. When you're looking at a large scale displacement, when you look at these kind of jobs, these are the skills that normally the legislations don't tend to look at. So I would like to commend the government and the Honorable Minister for bringing out a legislation that is so all-encompassing. When I say that it also looks across other laws, it provides, Madam, in Clause 18 that it would align with the needs of National Health Program, and in one of the clauses, Clause 10, Subclause 4, it provides for an interface with different medical fields to see what is the requirement of nursing staff and midwifery staff across various sectors. So this is a very, as I say, Madam, a very fluid bill, which is the way the legislations ought to be, so I would commend the government. Now, I feel, Madam, that this legislation might empower the Commission and the government to deal with the challenges that may be faced by the country in terms of the staff requirements for nursing and midwifery. Madam, first, India is now at the hub of medical tourism. Potential is likely to tremendously grow. Second, Madam, I find that even within India, there is a huge demand for nursing sector with the requirements of medical infrastructure going up. So the new bill might enable that this ecosystem is built in very quickly for ensuring that the requirements are taken into account. Having said this about the bill, there are 2 or 3 things that I may want the central government to focus on. Madam, I find that the nursing sector is a little skewed in terms of a few of the sectors being underserviced. So for instance, Madam, in Northeast, entire Northeast India, there are only 2% of colleges, nursing colleges which are there. So I would think, because this is unlike an engineering and medical courses where people will be able to travel far, a localized nursing sector close by might help. The other concern that I wanted the Honorable Minister to kindly show some attention on is that while this is largely female dominated, it seems that the leadership is skewed in favor of male leadership up till now shepherding this particular sector. I would request the Honorable Minister to consider it. Madam, now that I am concluding my speech, I just wanted to make 2 quick points on the Dental Commission. This is taking inspiration from the Medical Commission Act, a very salutary bill, so we support it. In the working of Medical Commission, I have found that there are 2 areas which may be considered by the central government. First, we find, Madam, that unlike nursing and medicine, in dental sector, India is now facing an oversupply. We have now crossed the World Health Organization requirement of 1 dentist for 5,000 people. We now have, for 7,500 people. Please conclude.
Just 1 minute, ma'am, because there are two bills. Just only one more minute. So there is a Niti Aayog recommendation. Madam, just give me 30 seconds, I'll conclude. There are other speakers. Yes, madam. Only 30 seconds, two quick points. There is a Niti Aayog recommendation that a bridge course can be done so that some of these dentists can be trained to become the basic medical practitioners of providing primary health care. The government may consider it. Then both in medical council and in dental council, madam, I find that the dental assessment and rating board, which is equal to the medical assessment and rating board, the government has very importantly provided that these functions can be carried out by independent accredited agencies. The National Medical Commission has not accredited any agencies. I am suggesting that so that the commission will be able to focus on more important issues, if these accredited agencies can be quickly identified, they will carry out the inspection. It can be supervised by the National Medical Commission or the Dental Commission. I thank you, madam, and I support both the bills. Thank you. Dr. M. Thambidurai. Thank you, Vice Chairman, Madam. Because we are embarrassed to take two bills together, which have different aspects, we have to discuss it. But anyhow, the chair has decided we have to bound for that. I am speaking that. Because dental council is separate, this is very important subject I want to discuss. But anyhow, sir, madam, here, Honorable Minister brought certain changes in the council. I welcome that. I am not objecting that. Establishment of a National Dental Commission in the place of Dental Council of India. I appreciate that what he has correct. But the point which is, another point is we are not able to accept that. Single national entrance examination. It's a state subject, madam. Health is a state subject. Education was concurrent list. In our Tamil Nadu, still we are not able to accept the NEET examination because it is making more a commercial thing. Instead of all the higher education institutions, they are even all NEET examination centers are flourishing. Therefore, I raised many times, even our committees, this kind of NEET coaching centers must be banned. The government has to come forward, ban such kind. Otherwise, the syllabus which we are present national education policy for the school education, students, nobody is attending that. The same way you are bringing once again national entrance examination you are bringing, the students will go to the entire coaching centers only. They are encroaching the state subjects also in that. Therefore, as far as the Tamil Nadu concerned, our ADMK party, we are not for NEET examination and also the single entrance examination for the dental council also. Dental also. That is where we are objecting that. Second thing, so I know I raised many times with the Honorable Minister, these central bodies, certain bodies, for example, Pharmacy Council, they are not allowing to start any institutions. Then other bodies want to start, we have to go to Supreme High Court, Delhi Court and Supreme Court, we have to go there. From the direction only we have to be able to start. Why this kind of councils are keeping their powers, not allowing others to start? Our Honorable Prime Minister wants to establish more institutions, more medical colleges, each district he wants to establish. His aim is that. Same in nursing courses also must come forward in India. That is a Modi's dream. But when that is the case, why these kind of councils they are not allowing? Same way, dental council also. Dental council not permitting any new medical colleges. This is another problem. Therefore, let our minister consider these things to see that this kind of council must not take more power. Even though government is interested, state and central government started institutions, they are not cooperating. Therefore, what sort of power they are having, we don't know. With this amendment, whether we will overcome, just now we start. That is why he said, this bill bringing together, we cannot speak anything. Especially nursing is an important subject. You are, madam, you are sitting there. It's a motherly thing, you are sitting there. This nursing is our side, our honorable say industry. It's not an industry. It is a service, motherly service. Mother is only can protect. God has given the power to you people, patient, not putting bill always like that. We're putting bill means it is you are asking you to sit down. Therefore, you have to be patient. Sir, you have 40 seconds to conclude. You have to be patient to see that nursing is very important subject. Our Indian people only serving through the world. If you go America,
Who is the nurse from Kerala may be there. That is their speciality there. Our human research development is the asset for the Indian country. Education is very important. Health sector important. Agriculture. 3 sectors only Indian can flourish. For the other things, whatever said, China is encroaching our industries means that kind Sir, of please competition conclude. is there. But Please why I'm conclude. telling, sir, I once again requesting only final Please point. conclude. Final point I'm putting. I request the Honorable Minister, let the courses come, new courses. Either state government also on the way not to allow to start allied courses, putting applications, many people are putting, they are keeping quiet. In Tamil Nadu, they are not allowing the health ministry to allow to Thank start you, sir. any new courses. Let the Next central speaker. government interfere that to Shri allow G.K. this kind of Vasan. course system. Thank you very much. Madam, I stand here to support both the bills on behalf of my party, ma'am. Number one, when we talk about Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, naturally, ma'am, we are bound to think of COVID-19, the service of nurses to the common people of India. They have saved lakhs and lakhs of people in our country, and many have sacrificed their life because of COVID-19. We have to be ever thankful to them, ma'am. Coming to the point, ma'am, nursing and midwifery professionals in the country are facing several challenges due to lack of educational qualification. Furthermore, uneven distribution of nursing institutes and the gap in the quality of teachers and nursing curriculum subjects. These professionals lack of opportunities and forces them to outmigrate to different fields to private sector. This has resulted in an acute shortage of nursing staff. So I kindly request the minister that this has to be rectified. This particular bill, I well understand, ma'am, proposes to remove the currently governing Indian Nursing Council Act 1947 and replace it with the National Nursing and Midwifery Commission. The INC Act, I am sure, will be responsible for ensuring the educational standards, minimum entrance requirements, prescribing curriculum for nursing courses, ma'am. I am sure this will solve their problem, and this particular bill will bring limelight to them. Coming to the National Dental Commission's bill, the bill aims to legislation to improve and revitalize the field of dentistry by repealing the Dentist Act of 1948 and dissolving the Dental Council of India, ma'am. Quickly, I want to finish. I will just tell 2 points. One, the benefits, promoting uniform and excellent dental education. 2, fostering ethical and professional dental care. 3, encouraging innovation and research. 4, fortifying dental education and practice. At the same time, ma'am, to the Honorable Minister, I would like to tell certain areas which require further deliberation. Number 1, representation and autonomy. The bill raises concern regarding the significant empowerment of the central government through its authority to appoint the chairperson and ex officio members of the NDC. Some worry that this heavy reliance of the central government for the selection of all commission members could result in an undue concentration of power and control in the hands of the central government, which has to be taken care. 2 more important points, ma'am. One is feasibility and cost effectiveness, which is very important. Establishing a district dental commission when a national medical commission already exists to oversee a branch of medical encourages a multi-yard bureaucratic system. Creating new commission, particularly during economic downturns, will have multiple challenges. I am sure the minister will take care of it. The last important point is lack of attention to dental auxiliaries. The Dental Act 1948 recognizes 2 categories of auxiliaries, dental hygienists and dental mechanics. However, the present situation is unfortunate
with only 6,605 auxiliaries in India, indicating neglect of these allied health professionals. The current bill overlooks the crucial role of dental auxiliaries and failed to provide adequate acknowledgement and definition of this role. With this, ma'am, I am sure the Minister will do the needful for this profession. With this, I support this bill. Thank you very much. Shri Bhubaneshwar Kalita. Thank you, Madam Vice Chairman, and I'm very happy to see you in the chair and congratulate you. I rise to support both the bills, the National Dental Commission Bill 2023 and National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. Madam, while dealing with both the bills, I will first speak on a few points on National Dental Commission. At the outset, I congratulate the government led by our Prime Minister, Sri Narendra Modi, and also congratulate the Health Minister, Sri Monsoon Mandavia, and his team in the Health Ministry for bringing revolutionary changes, very significant changes in the healthcare system of this country. Madam, we have seen a lot of achievements and a lot of change and transformation in the healthcare system of this country. And if I'm not going to count all of them because that I will not have that kind of time because I love to speak on the bill also. So, but I must congratulate him that the National Dental Commission Bill 2023 has been brought after the original bill was 1948, and after 75 years of this bill has come. So I congratulate the minister that he thought about it. And before this, he brought the National Medical Commission Bill 2019, which is again after long gap of the original bill. So I congratulate both of them for taking this initiative to bring the changes into the healthcare system of our country. Madam, to start with the National Dental Commission Bill, it has dealt with the discrepancies and weaknesses of the original bill of 1948, and the objectives being this bill is replacing the 1948 bill, and it aims to improve access high quality and affordable dental education, ensure availability of dental professionals and services throughout the country, conduct periodic and transparent assessments of dental institutions, facilitate the maintenance of National Dental Register, and enforce high ethical standards in all aspects of dental services. Madam, and with that end in view, the Dental Council has been replaced by the National Dental Commission, and here the Dental Commission has been formed with which will be chaired by Cabinet Secretary, and there will be ex-officio members, presidents of 3 autonomous boards, Director General of Health Services, Chief of the Center for Dental and Educational Research at AIMS. Madam, it will include part-time members also. Here I have to make some suggestions, because the part-time members are normally taken from the fraternity. And as we see, if the commission is flooded with the people from the fraternity only, the views of independent views doesn't come. So in formation of the commission, it should be taken care that independent views come over there also with experience of the present day healthcare system. Madam, the functions of the National Medical Commission has been regulating
governance standard for dental education, examination and training, regulating dental institutions and research, accessing infrastructure requirements in dental healthcare, ensuring the admissions of to Bachelor of Dental Surgery happen through the NEET exam. Madam, here the original bill 1940 was 48 was nearly silent, but this bill has brought clarity to the entire system of dental education and dental training. So I appreciate and I appreciate the minister and the health ministry for thinking about it to revolutionize the entire healthcare system. Madam, we know that health is a state subject, but when our Honorable Prime Minister took over, Sri Narendra Modi ji took over, it has revolutionized the system. Most of the initiatives that are seen today in the healthcare system of the country, most of the systems are, most of the initiatives are taken by the central government. Although it is a, I am not condemning the state government, they are also doing it. But from COVID onwards and before that also, and bringing these new bills with a new outlook has been brought by the central government only. For that I congratulate the minister, because these all initiatives are mostly coming from the central government, which are being followed by the state governments and revolutionize the healthcare system. Particularly during the COVID, we have seen the initiative by the Honorable Minister and with the guidance of our Prime Minister, that a pandemic like which was never seen in the world, COVID, was tackled very efficiently, which is being appreciated abroad, all over the world, and the new areas that has been covered up. Now, as you see, somebody mentioned about the mental health. After the COVID, one thing that has come as a new phenomenon is mental health, and also, of course, that sudden heart attack. So these are areas where the ministry is studying. So far, our committee is also studying, making a study on all that. And I hope that these areas will be covered efficiently by the ministry. And while coming to the Ethics and Dental Registration Board, Madam, in every legislation and every field, ethics is one area which is very necessary. Because even in the original bill, this was mentioned about the ethical area has been was mentioned here. As we see that the Ethics and Dental Registration Board maintains online national registers of dentists, dental auxiliaries, regulates standard of conduct, ethics, and scope of dental practice, suspends, cancel licenses of dentists for misconduct or unethical behavior. Madam, this is a very sensitive area, and the unethical behavior, how it will be judged and how it will be determined. So here the ministry has to, all-round minister has to give some more attention into this, so that this is specified. There is another in section 37, the recognition of dental qualifications granted by institutions outside India. Madam, as you have seen, Ukraine war and many other unrest in the world has seen that the Indian students studying medical in medical institutions abroad have some issues with that. They have come back. If their degrees are de-recognized and if they cannot practice, their entire family support will go, because they have gone with the family support or bank support and come back, they cannot repay the bank. So I think this ethical commission
will put more attention into it. And a few words on the establishment of medical education institutes. I really, this country is happy that every district is going to have a medical college. At the same time, it will have one nursing college also. In the last budget, Honorable Prime Minister has declared that along with the medical college in every district, there will be a nursing college. Madam, you are quite aware that the nursing institutes in Northeastern region are very few. Although many in number nurses comes from Northeastern region, and there is great demand abroad also because of their English language and their sincerity and discipline. They are needed. Every other country needed all of them, and there is great demand. But I'm not saying that we should send all of them abroad, and then we'll have shortage of nurses in our own hospitals. So I think the ratio or the balance will be made. A mechanism can be established which will maintain the balance between nurses going abroad and nurses demand for nurses in our own country. So I have nothing much more on nursing and midwifery bill commission bill. With this, I thank and congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Health Minister and his team in the Health Ministry. Thank you very much. Srimati Mamata Mohanta. It is a very good day that 100% scenario is governed by ladies, Mahila, पूरा मंच पे और नीचे टेबल. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया. मैं मेरे पार्टी बिजू जनता दल का तरफ से दी नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 के आलोचना पर भाग ले रही हूँ. महोदया, दुनिया में सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं है. इस सेवा क्षेत्रों में जुड़े सभी को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ. सेवा का नाम लेते ही पहले मदर टेरेसा का नाम आती है. सेवा के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है. ये बात सेवा क्षेत्रों को कितना गुरुत्व मिलना चाहिए वही बताता है. इस सेवा क्षेत्रों से जुड़े सभी सेवक और सेविका के लिए कुछ करने के वक्त आया है. महोदय, इस राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 लोकसभा में पारित हुआ है. ये भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम 1947 में संपर्कित है. यहाँ नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी के शिक्षा, सेवा और उन्नत मान का गुरुत्व दे रहा है. इस बिल में इन सभी क्षेत्रों के लिए गठित कमीशन में 29 सदस्य रहेंगे. इस कमीशन के अध्यक्ष नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्रों में स्नातक समेत 20 साल का अनुभव रहेगा और बाकी सदस्य स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्षेत्रों से रहेंगे. इस कमीशन शिक्षा नीति प्रस्तुत करेगी. शिक्षादान केंद्र की नियमित जांच, शिक्षादान केंद्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुधार के लिए अध्यापक का नियुक्ति आदि विभिन्न स्तर पर नजर रखेंगे. केंद्र सरकार एक परिषद स्थापन करेगी. ये परिषद राष्ट्रीय काउंसिल को उपदेश और सहयोग करेगी. महोदय, बिल के हिसाब से इस कमीशन के अधीन 3 बोर्ड गठन होगा जो परीक्षा, शिक्षा केंद्र का रैंकिंग पर और शिक्षा नीति, स्वास्थ्य क्षेत्रों के ऊपर नज़र रखेंगे. सभी राज्यों के एक कमीशन गठन होगा जहां 10 सदस्य रहेंगे. स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्य रह सकते हैं. राज्य के कमीशन राष्ट्रीय कमीशन के हिसाब से सभी राज्य करेगा. इस कमीशन गठन होने के बाद कमीशन कार्य शुरू होगा तो अभिज्ञता प्राप्त सेवक या सेविका अभिज्ञता सेवक या सेविका आएंगे.
जिससे सभी को उन्नत मान का सेवा मिलेगा। इसके साथ सेवा का प्रकृत मूल्य सब समझेंगे। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी इस महत्वपूर्ण बिल को राज्यसभा में आगत करने के लिए। इस बिल को मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Shri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, both National Nursing Commission Bill 2023 and National Dental Commission Bill 2023, both the bills are at another progressive legislations and about the bringing crucial reforms in the medical sector. I, on behalf of my party, YSR Congress Party, and my leader, congratulate Mansukh Mandavia ji and support the bills, both the bills. Madam, I have only 3 points to be brought to the notice of the Honorable Minister. The first point is the 85 to 90% of the adults have got the dental cavities, including myself. I also have got the dental. It is no fault of the minister, but still I am bringing it to the notice. Along with about 60 to 80% children, madam. Over 50% of the Indians with dental health issues receive treatment advice from some other dentists, such as chemists, not really dentists, chemists, madam. This is the problem. In 2020, India achieved more than ideal dentists to population. Number of dentists to that of the population proportion ratio is about 1:5,000 as against 1:7,500 recommended by WHO. It's really good. Madam, however, there is a great urban-rural mismatch, which I would like to bring to the notice of the minister, with the ratio reaching 1:1 lakh, urban-rural mismatch. There is a severe lack of awareness about the mental and oral health and disease in these rural areas, and access to the education is lower in the rural areas, madam. I have one suggestion to be made to the minister. Madam, National Dental Commission should take the initiatives to assign each dental college to each rural area, every rural area, and appoint one dentist for each primary health center, as the dentists play a key role in educating the rural people. This is the suggestion what I would like to make to the Honorable Minister. And the second point which I would like to bring to his notice is, there are startling vacancies in the dental colleges, not the hospitals. There are vacancies, which means that we are not able to absorb the dental students into the system. Of the 1,89,420 seats offered between 2016-17 and 2022-23, 36,585, almost about 20% remain unfilled. This concerning trends extend to both UG and PG dental courses across the country, madam. I request the Honorable Minister to address this issue. Why colleges are not able to fill the vacancies for the students, seats for the students. Taken or implemented in this regard. I request the Honorable Minister to take care of these issues. And for the last point, madam, particularly the nurses, the nursing, insofar as nursing is concerned, given the nursing profession is largely dominated by women, they are subject to a host of problems at the workplace, including sexual harassment. I urge the minister to outline, because they may not be able to express, this is the problem which is prevailing throughout the country. I urge the minister to outline how these concerns about the workplace conditions for nurses will be addressed. Thank you very much, madam. Shri Kanaka Medala Ravindra Kumar. Thank you, Deputy Chairman, madam, for giving this opportunity to speak on the bills, National Dental Commission Bill and National Nursing and Midwifery Commission.
Sir, this bill, madam, this bill provides, wide section 4 speaks about the composition of National Dental Commission. As per the provisions of section 4 of the bill, there is no place for states in the composition of National Dental Commission. And states will be represented in the National Dental Commission only as a part-time members. That too, not all the states. Only 10 members on rotational basis. But the procedure for appointment and eligibility criteria for appointment of such members have not been specified in the Act. The 10 members who will be nominated by the states and union territories in Dental Advisory Council on rotation basis from among the nominees of the states and union territories under Clause C and D of the subsection 2 of 11 of the Dental Advisory Council. The bill has no provision for containing and prescribing the procedure with regard to that. The procedure will be prescribed later under the rules that will be framed by the executive. The Act is in vague. But 9 members to be appointed on rotational basis from among the nominees of the states and union territories under Clause E of subsection 2 and section 11 of State Dental Council. So to be a member of in the National Dental Council, one has to be first be a member of either Dental Advisory Council or State Dental Council. Then only their respective name will be considered for the membership in National Dental Commission. Not all the members from the state and UT will become a member of National Dental Commission. Some will be selected on rotational basis. These procedural aspects and creates some doubt, and it has to be clarified. It is in vague. And sir, the students with regard to the get admission into dentist course after writing NEET examination conducted as per the National Medical Commission Act. They give yearly exams during the pursue their UG course. The bill provides, again, then the bill provides for provision of national exit test. As per the provisions of this section, the student pursuing common undergraduate dentist course will have to clear national test to get license for practice of dentistry. So this bill provides multifarious procedure, and also the aims and objects of this Act. Originally an expert committee was constituted, and subsequently department-related standing committee also recommended with regard to the provisions. But there are constitution of National Dental Commission, and also there are 3 autonomous bodies, namely Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board. Likewise, Dental Assessment and Rating Board, Ethics and Dental Registration Board to regulate professional conduct. Likewise, there are certain ambiguity with regard to the qualified and eligibility of the respective committees to nominate it and to select them by the government. Likewise, the Sir, please certain conclude. principles, Please certain principles have to be followed. 1 minute. Educational 30 seconds, standards. please conclude. Final, 1.5 minutes. Educational standards, training centers, creating infrastructure and faculty standards, and increasing the number of institutions and training centers, and qualifications and eligibility criteria have to be looked into. While finalizing this bill, the Honorable Minister has to take care of and address all these problems. Thank you for giving this opportunity. Dr. Mansukh Mandavia to reply to the discussion. Deputy Chairman Sir, नेशनल डेंटल कमीशन एवं नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल आज सदन में
9 सदस्यों ने बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। जो सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, सभी ने समर्थन दिया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। सुस्मित पात्रा जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, एस निरंजन रेड्डी जी, एम थम्बीदुराई जी, जी के वासन जी, भुवनेश्वर कलिता जी, ममता मोहंता जी, विजय साई रेड्डी जी और कनक मेटला रविंद्र कुमार जी, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। विषय डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि हम हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, और देश की समय स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने अपने पंच प्राण को बताते हुए रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है? विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े तो हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, सारी दुनिया में, मैं तो उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, बात कर रहा था, सभी विश्व के हेल्थ मिनिस्टर के साथ दैनिक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिन बात होती थी। दुनिया को आश्चर्य था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के सामने एजिटेशन चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, हमारी नर्स ड्यूटी पर नहीं जा रही है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। वैसी स्थिति में इंडिया में डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, नर्सिस भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। केवल सेवाएं नहीं, अपने प्राण की बिना परवाह करे वो देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे थे। ऐसे मेरे डॉक्टर्स, ऐसे मेरे सभी नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ को मैं आज पार्लियामेंट के फ्लोर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उस वक्त मोदी जी ने उसको विरासत से प्रेरणा ली। विरासत क्या थी हमारी? हमारे देश में हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है, और कोई कंट्री के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। और इसलिए ये देश की जनता में सेवा भाव को प्रोत्साहित करने से हमें फायदा होगा, या तो उसका बेसिक, उसका मन को हम कंट्रोल सकते हैं। मोदी जी ने उस वक्त हमारे हेल्थ वर्कफोर्स के लिए ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, आकाश में ट्राई कलर से उसको अभिनंदन किया था, और उसके जवाब में हमारे सारे देश के कोरोना वॉरियर्स लगे और देश को कोविड क्राइसिस से बचा लिया। ये हमारी विरासत है, और विरासत से प्रेरणा लेकर हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करने की आवश्यकता है मेडिकल एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में? जो भी बदलाव करना है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हमने केवल डिस्पेंसरी खोलने की बात नहीं की। भूतकाल में होता था, मांग आई तो डिस्पेंसरी खोल दो, जी नहीं, हमने डिस्पेंसरी भी खोली। लेकिन जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लास्ट माइल के व्यक्ति को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध करानी है, तो उसके लिए हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको ये फ्लोर पर बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट बन। आज मेडिकल MBBS की कॉलेज 350 थी, आज 704 MBBS की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। एक क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। डॉक्टर बनने लगा, और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन हम अच्छा, बेहतर और विश्व की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर का भी निर्माण करें और स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन भी दे। नॉट ओनली फॉर MBBS या मेडिकल एजुकेशन, बट नर्सिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। डेंटिस्ट्री इज वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये सब मेडिकल एजुकेशन का, एलाइड हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये सब मेडिकल एजुकेशन का एक पार्ट है।
और देश की रिक्वायरमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है और दुनिया की आवश्यकताओं को भी हमें पूरी करना है। उसके लिए जो एक होलिस्टिक का एफर्ट हमने लिया है, इस एफर्ट के फलस्वरूप हम सबसे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन लाए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद एलाइड हेल्थ सर्विसेज बिल लाए, एलाइड 56 टाइप की हेल्थ सर्विसेज के को रेगुलेट करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन का प्रावधान किया। उसको आगे बढ़ते बढ़ते हम आज डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग मिडवाइजरी बिल लेके आए हैं और उसके लिए बहुत बड़ी उसके लिए रिकमेंडेशन भी हुई है और मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी 2013 में बनी थी और पीजीआई चंडीगढ़ के एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि सभी एजुकेशन के लिए आपको स्वायत्त कमीशन बनाना होगा, जो काउंसिल चल रही है उसके जगह पे आप कमीशन बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन की थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2017 में 109वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस सेक्टर के लिए मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग कमीशन होना चाहिए और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी। उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी हेल्थ सेक्टर के लिए अलग कमीशन का प्रावधान हो। उसको देखते हुए हमने 2 कमीशन लाए और तीसरा कमीशन हम आज लेके आए हैं। ये लेके आने के लिए क्या उसको क्यों अनुशंसा करनी पड़ी, मैं इस फ्लोर पर बताना चाहूँगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे रहना पड़ जाता है और इसलिए हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे दें, नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई, अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, उसके लिए कोर्सेज चालू करना, उसके लिए सीट का प्रावधान करना और उसके लिए जो बदलते समय की आवश्यकता है उसको कैसे हम फुलफिल करें, उसका भी विचार करना आवश्यक था। उसको आज स्थिति ऐसी थी, जो काउंसिल हम सब लोगों ने मेडिकल काउंसिल की स्थिति देखी थी और आज मेडिकल काउंसिल में और उस वक्त मेडिकल कमीशन में और काउंसिल में क्या फर्क पड़ गया। काउंसिल में जो लोग स्थापित लोग थे कैसे भी करके इलेक्टेड होके आ जाते थे, 10-10, 15-15 साल से वही लोग इलेक्टेड होके आते थे, अपना ग्रुप बना लेते थे और स्थापित हित हो जाते थे। उससे बहुत मेडिकल काउंसिल की स्थिति बिगड़ गई थी। आज कमीशन के रूप में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। मेडिकल कमीशन के द्वारा नई मेडिकल कॉलेज पारदर्शिता के साथ खोली जा रही है। मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के सभी मेडिकल कॉलेज को आज नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ वर्चुअली जोड़ दिया गया है। 16 टाइप के कैमरा के द्वारा कोई फिजिकल इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बिल में भी हम प्रावधान लेके आए हैं कि कोई नर्सिंग कमीशन के द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता ना हो, डेंटल कमीशन के द्वारा कोई डेंटिस्ट्री की कॉलेज का फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता न हो। ये व्यवस्था ऑलरेडी हमने नेशनल मेडिकल कमीशन में खड़ी कर दी है। उसमें 16 कैमरा लगा हुआ है मेडिकल कॉलेज पर। ओपीडी कितनी आ रही है, पेशेंट कितने आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, रजिस्ट्री ओपीडी रजिस्ट्री हो रही है दिखाई दे रहे हैं, कितने पेशेंट और कितने इक्विपमेंट है दिखाई दे रहे हैं। वहाँ हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारी मेडिकल कॉलेज को सूचना मिलने लगी है कि भाई आपके यहाँ ओपीडी कम हो रही है, आपकी इतनी ओपीडी होनी चाहिए, पप हो जाता है वहाँ पर, बढ़ाओ लेकिन आपकी मान्यता रद्द होगी। ऑटोमेटिक वो वहाँ तैयारी करने लगेंगे। वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमें पता चलता है यहाँ बैठे बैठे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बता देता है कि ये मेडिकल कॉलेज में ये टाइप की सुविधा का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम है, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका इंडोर पेशेंट कम है। तो ये मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन में इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, जो लोग 10-15 साल से बैठे रहते थे वहाँ, उसके जगह पे कमीशन बनने से ये मिडवाइजरी नर्सिंग कमीशन में भी प्रावधान रखा है, डेंटल कमीशन में भी प्रावधान रखा है। केवल 4 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाएंगे। कमीशन की मुदत 4 साल होगी, उसके ज़्यादा कोई नहीं रह पाएंगे ताकि पारदर्शिता आएगी। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप वहाँ एजुकेशन दिया जाएगा। आज ये प्रावधान ही नहीं है, क्लेरिफिकेशन ही नहीं है
कि कौन सा काम किसको करना है, अंदर कमीशन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसका नतीजा भुगतना पड़ता है हमारी डेंटल कॉलेज को, हमारी नर्सिंग कॉलेज को, नर्सिंग सेक्टर में भी। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, दुनिया बदल गई है, दुनिया की रिक्वायरमेंट बदल रही है। ये बदलती रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोर्स सिलेबस सभी में बदलाव करने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन की सिस्टम को बदलना है। आज एक ऐसी स्थिति मैंने देखी, एक बार मैं रिव्यू कर रहा था तो इंस्पेक्शन करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले और बांटने वाले या तो एफिलिएशन कॉलेज को अप्रूव करने वाले वही होते थे। तो जो रूल्स रेगुलेशन और प्रावधान होते थे, मैं प्राइवेट कॉलेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं प्राइवेट कॉलेज के हित में ही वहाँ जो नीतियाँ बने उसके लिए प्रयास करूँगा। प्राइवेट कॉलेज के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस वहाँ नहीं होना चाहिए। उसके पर उसको बैलेंस करने वाला आज कोई नहीं था। माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, बट मेरा कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं। एक काउंसिल तय करेगी, वो होगा, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित तो होनी चाहिए। तो ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान और कोई व्यवस्था ये दोनों काउंसिल में नहीं थी। फिर उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबल करें, हम उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करें, हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से रेगुलेट करें, हम उसको कैसे स्वायत्त बॉडी। यहाँ मेरे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपने बिल के विषय के संदर्भ में अपने बात रख रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि स्वायत्त, हम उसको वर्क करने के लिए स्वायत्ता देना चाहते, दैनिक काम में हम कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो काउंसिल है उन्होंने जो जजमेंट दे दिया उसकी कोई एपेलेट अथॉरिटी ही नहीं, और कोई डिसीजन ऐसा हो गया है तो उसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं। आज नेशनल मेडिकल कमीशन में हमारा MARB बोर्ड कोई डिसीजन ले लेता है, वो अपनी वजह से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा हमारा कहने का आशय नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उसके सामने किसी को कुछ कहना है, मेडिकल कॉलेज को कुछ कहना है, तो आज वो मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के सामने अपील करते हैं। मेडिकल कमीशन के चेयरमैन से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री में वो अपील करते हैं और वहाँ से 3 स्टेप उसको मिल जाता है, बाद में ही उसको कोर्ट में जाने की स्थिति निर्माण होती है, ताकि कोर्ट का केस भी नहीं बढ़ता है। पहले ऐसी स्थिति थी, हर दिन हर मेडिकल कॉलेज कोर्ट में चली जाती थी। मैं आज आपको माननीय डिप्टी चेयरमैन सर बताना चाहूँगा, खुशी से बताना चाहूँगा, दिस ईयर 54 न्यू मेडिकल कॉलेज हमने अलॉट की है। 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी है, प्राइवेट को भी दी है, गवर्नमेंट को भी दी है, लेकिन आज कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, सब कंसेंसस से हुआ है। हमने उसको बता दिया है, भाई आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं देंगे, एकदम पारदर्शिता के साथ, कोई किसी को मिलना नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज को, पहले तो ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज लेना मतलब दूसरी तीसरी बात होती थी, हमने क्लियर किया। मैंने स्वयं ने एक बार सभी मेडिकल कॉलेज की मीटिंग करके कहा, कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है, कोई बिचौलियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपने रिक्वायरमेंट पूरी की, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास फैकल्टी होनी चाहिए, और तीसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास पेशेंट होना चाहिए। ये 3 प्रावधान पूरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, आप खुशी से आइए, भारत सरकार आपको अप्रूवल दे देंगे। आज 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल ये साल में दिया गया है, क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हम रेगुलेट करके रखें मेडिकल एजुकेशन को, नर्सिंग एजुकेशन को, डेंटल एजुकेशन को, ताकि हमारे स्टूडेंट को विदेश जाने की नौबत आए। हमारे प्रति वर्ष हजारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश पढ़ने के लिए जाए और वहाँ खर्च करे, वहाँ एजुकेशन क्वालिटी कैसी है नहीं है उसका मैपिंग हम यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। और हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान यूक्रेन की स्थिति देखी, जब मुझे मेल आने लगा कि हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हो गया है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, और मैं बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल यूक्रेन में ही नहीं होंगे, दुनिया के देशों में कितने हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेडिकल एजुकेशन में है, तो पता चला कि 60,000 स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे थे। और उसको कोविड के दरमियान और यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान ये स्थिति में मोदी जी ने
वापस लाने की एक बहुत बड़ी मुहिम ऑपरेशन चलाया और हमारे सारे स्टूडेंट को वापस लाए। तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश में पढ़ते हैं। क्या हम हमारे देश के युवाओं को इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते? क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े? हमारे ट्राइबल विस्तार के, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट युवा, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन लेने का अवसर मिले। हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले या तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हमारी युवतियों को नर्स बनने की अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए क्या करना चाहिए? और हमने लगभग ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज चालू कर दी है और आगे मेडिकल कॉलेज हम बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी, नर्सिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज देश में यहाँ बात हो रही थी कि डेंटिस्ट, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, उससे हम दुनिया की सेवा भी कर सकते हैं और आजीविका भी कमा सकते हैं। हम भली भांति समझते हैं। आज हमारे केरला की नर्सिस, आज हमारे भारत की नर्सिस, आप अमेरिका में जाओ, कल्पना ही नहीं कर सकते भारत के डॉक्टर और भारत के नर्सिंग के बिना वहां का हेल्थ सेक्टर पूरा हो सकता है? जी नहीं। आज अमेरिका की 8% नर्सिस इंडियन नर्सिस है। आप गल्फ कंट्री में चले जाओ, गल्फ कंट्री में ज्यादातर हमारा हेल्थ वर्कफोर्स इंडियन है। और आप केरला में चले जाओ, केरला की जो आपको समृद्धि दिखाई दे रही है, वहां बहुत बड़ी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन लोगों का परचेज पावर ज्यादा है, क्योंकि हमारे लोग वहां से दुनिया में जा रहे हैं, नर्सिंग के रूप में, पैरामेडिक स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिरहाम और डॉलर में पैसा कमाते हैं और अपने वतन में वो पैसा भेजते हैं, ताकि हमें वहां हमारी समृद्धि दिखाई दे रही है। ये समृद्धि को एनकेस करने के लिए देश में नर्सिंग की संख्या बढ़े, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। हील बाय इंडिया, हम इंडिया के द्वारा दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के तहत वो दुनिया में भी अपनी सेवा दे सके। उसके लिए आज नर्सिंग सेक्टर में भी सिलेबस बदल रहा है। दुनिया की क्या डिमांड है? दुनिया में आज विश्व के यूरोपियन देश, जापान, वहाँ से डिमांड आती है कि हमें इंडियन नर्स चाहिए, क्योंकि इंडियन पीपल्स आर पोलाइट एंड पीस लविंग। इंडिया के लोग पोलाइट होते हैं, पीस लविंग होते हैं, और इसलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया के मेन वर्क फोर्स हमारे यहाँ आए। जापान ने कहा कि जापानीज लैंग्वेज हमें सिखानी है और हमारी नर्स यहाँ से तैयार हो, जापानीज लैंग्वेज में तैयार हो। और उन्होंने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिंग वर्क फोर्स मिले तो अच्छा है। और मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हमने असम की 3 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दिया और हमने डिसीजन लिया है कि सभी हमारी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज में सेकंड लैंग्वेज के रूप में 5-6 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई की है। ये 5-6 लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखे, ताकि वो यहाँ से वहाँ जॉब के लिए जाए तो उसको सुविधा रहे और दुनिया की भी मांग पूरी हो और हमारे देश के लोगों को रोजगारी का अवसर भी मिले, देश में भी रोजगारी का अवसर मिले। और केवल हम मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, उसके साथ हम देश में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज चालू की है। सभी मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम मंजूर करते, 10 करोड़ रुपया एडिशनल दिया जाएगा, ताकि मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी, बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी वहाँ स्टार्ट हो और वहाँ बेहतर एजुकेशन मिले। यहाँ सम्मानीय सदस्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन, एलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मेडिकल कॉलेज में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं भारत सरकार मानती है कि मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का ही एजुकेशन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
MBBS के साथ वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी चले, वहाँ पैरामेडिक और हेल्थ सर्विसेज भी, ऑल टाइप ऑफ एलाइड हेल्थ सर्विसेज के कोर्स भी चले। और हमारे तंबी दुराई जी ने कहा हम तो ओपन है, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करती होगी तो मैं अवश्य लिखूंगा कि संसद में ये विषय उठा है, आप आपके राज्य में एलाइड हेल्थ सर्विस का कोर्स कोई चालू करना चाहे तो अवश्य उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही मिल जाता है और हमें हेल्थ वर्क फोर्स, न्यू स्किल हेल्थ वर्क फोर्स मिल जाता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि राज्य सरकार उसके पर काम करे। यहाँ नेक्स्ट के बारे में भी बात हुई, नेक्स्ट की एग्ज़ाम हम मेडिकल कॉलेज में भी MBBS के भी लेना चाहते हैं और डेंटल कमीशन द्वारा डेंटिस्ट्री और नर्सिंग के लिए भी लेना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लीगल विभाग में हो गया है। फॉर एग्जांपल कोई LLB करता है तो LLB हो गया, लेकिन उसको एडवोकेट के रूप में जब प्रैक्टिस करनी है तब उसको एग्ज़ाम पास करनी होगी। जब एग्ज़ाम पास करने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे आप MBBS हो गए, आप BSc नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लेनी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम से पास आउट व्यक्ति वहाँ जा सकता है और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्ज़ाम कठिन एग्ज़ाम ले ऐसा नहीं है। जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है और अगले साल में हमने MBBS के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा नर्सिंग एजुकेशन दे पाए, हम बेस्ट से बेस्ट हमारा डेंटिस्ट एजुकेशन दे पाए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारी देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा, ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी, पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा, कोई बिचौलिया और किसी की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक बैलेंस एजुकेशन यानी कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपील की दी जाएगी, ताकि उसकी कोई बात को रखना है तो अवश्य रख पाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ असेसमेंट करना है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम से कम करना है, ताकि एजुकेशन सचमुच एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा एजुकेशन बने और दुनिया में छवि होनी चाहिए। आज मुझे प्राउड है, हम सबको प्राउड है, इंडियन डॉक्टर हैं, दुनिया रिगार्ड करती है। दुनिया को हेल्थ वर्क फोर्स चाहिए तो पहला वो अप्रोच करे इंडिया को कि इंडिया से हमें नर्स मिल रही है, इंडिया से हमें डेंटिस्ट मिल रहा है, इंडिया से हमें डॉक्टर मिल रहा है, इंडिया से हमें अलाइड हेल्थ सर्विस फोर्स मिल रहा है, तो पहली प्रायोरिटी दुनिया के लिए इंडिया होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम नर्सिंग कमीशन और डेंटिस्ट कमीशन बिल लेके आया है। एक के बाद एक बिल में आपके सामने रखूंगा और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे श्रद्धा है कि यूनानिमसली हम बिल पास करेंगे। I shall first put the motion regarding consideration of the National Dental Commission Bill 2023 to vote. The question is that the National Dental Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill.
Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 to 11 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 5 to 11 are adopted. Clause 12 stands part of the bill. There is one amendment, number 3 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clauses 13 to 59 and the schedule stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 13 to 59 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Mansukh Mandavia to move that the bill be passed. सर मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेशनल डेंटल कमीशन बिल को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 to vote. The question is that the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 57 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 57 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Mansukh Mandavia to move that the bill be passed. सर मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल 2023 को पास किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Special mention. Dr. Sushil Kumar Modi, subject concerned over increased cases of suicides among students. मैडम मेरे स्पेशल मेंशन का सब्जेक्ट है कंसर्न ओवर इंक्रीज्ड केसेस ऑफ सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स. In 2021 there have been 10,732 suicide cases of students below the age of 18 years. It depicted an increase of 4.5% from the previous year. In the last 5 years,
75 students have committed suicide in IIT, IIM, AIMS, and other top premier institutions. These cases have been increasing at a concerning rate. In Kota this year, police have reported more than 15 suicides. The high number of suicides reflects the severe mental and physical stress the students go through to secure college admissions in the premier universities. The students face severe academic stress and develop mental health issues because of the intensive competition in the medical and engineering examinations. Factors like low self-esteem due to poor scores in examinations at the coaching centers, pressures of parental expectations, financial constraints, and the stigma around poor performance contribute to the students' constantly deteriorating mental health. The consequences of relentless academic pressure are extremely concerning. Thus, I request the government to develop a comprehensive suicide prevention mechanism and implement the same in mission mode to harness the results at the earliest. The government should take a proactive initiative to enhance mental health support within coaching institutes, schools, and universities. The number of counselors available should be increased, and a mechanism should be developed to communicate properly between the students and the counselors. There should be awareness campaign targeting teachers, parents, and students. Increased awareness among the public will help in early identification and treatment of suicidal tendencies. I urge the government to look into the matter. Thank you, sir. Srimati J.B. Mather Hisam. Absent. Srimati Mamta Mahanta. Speak in Odia. महोदया ओडिशार मयूरभंज जिला अधीन बांगरीपोशी ठारू प्रभु जगन्नाथ धाम पुरी पर्यंत नियमित ट्रेन चले सकाळु एक ट्रेन पुरी जाए एवं संध्यारे पुणी पुरी ठारू एक ट्रेन बांगरीपोशी को आसी थाए ट्रेन नंबर 12891 बांगरीपोशी पुरी जाई थाए और ट्रेन नंबर 12892 पुरी ठारू बांगरीपोशी आसी थाए यह एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यही दुई ट्रेन द्वारा अंचलवासी बहुत उपकृत होती केवल मयूरभंज जिला नुहे बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक भुवनेश्वर विभिन्न वर्गर लोक यथा चाकिरिया श्रमिक भली बहुत लोक उपकृत होती मयूरभंज रे ये एकमात्र ट्रेन जहाँकि प्रतिदिन लोक जीवाआसिया करती यही ट्रेन उपरे निर्भर करती तेबे महोदय दीर्घ मास हम पुरी ठारू बांगरीपोशी जाऊथुवा ट्रेन प्रतिदिन 2-3 घंटा विलंब जाऊँगी पुरी ठारू अपराह्न 4:20 छाड़ी भुवनेश्वर को 5:25 पहुँचे सेठारू 5:30 छाड़ी थाए हेले यही ट्रेन पुरी ठारू बाहर 2-3 घंटा विलंब होउची फल लोके बहुत हैरान होउचंती बांगरीपोशी पहुँचवा बेलू राति 2टा हो जाउची रेल कर्तृपक्ष एने गुरुत्व देउना तेणु यही पवित्र गृह में मोर अभियोग रखी आपण माध्यम मोर अनुरोध रेल विभाग एप्रति दृष्टि दे लोकों सुविधा पाई ठीक समय ट्रेन चलाचल करिवो बोली आशा करुच्ची धन्यवाद थैंक यू श्री मोहम्मद अब्दुल्ला I lay on a table. Kindly permit to lay on I lay on a table. Thank you. Thank you. Thank you. Sri A.D. Singh, not present. Sri Muhammad Nadimul Haq, not present. Sri A.A. Rahim, not present. Sri Vijay Pal Singh Tomar. वैसे तो मैंने सेक्रेटरी साहब को बताया भी था मैंने विषय दिया था कि मेरे ज़िले में 3.37 मीटर जल स्तर नीचे चला गया है और पूरे पश्चिम की यह हालत है लेकिन मेरे को दिया वो जो मैंने पहले 0 आवर में उठा दिया कहा कि अब तो यही बोलना पड़ेगा। तो महोदय मैं दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषित जल पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यमुना नदी काली नदी हिंडन का जल स्तर
स्लॉटर हाउस, चीनी मिल, पेपर मिल, डिस्टिलरी प्लांट, केमिकल कारखानों के प्रदूषित जल से इन नदियों का पानी जहरीला हो गया है। यह अपने समीपवर्ती सैकड़ों गांवों में कैंसर की बीमारी का कारण बना हुआ है। काली नदी में जहां भी सैंपल लिया गया वहां ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई, जबकि TCO 2,80,000 और वीडियो की मात्रा 40 पाई गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस नदी के पानी में पारा, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक व फ्लोराइड नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक है। स्पष्ट है कि काली नदी का पानी पीने लायक तो है ही नहीं, साथ ही सिंचाई या किसी अन्य काम में आने लायक भी नहीं है और ऑक्सीजन खत्म होने से जलीय जंतु भी गायब हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर काली नदी के किनारे चिकित्सा कैंप लगाए गए, जिसमें पाया गया कि नदी के समीपवर्ती गांवों में कैंसर तथा अन्य बीमारियां जैसे पीलिया है, पेचिस है, हैजा है और चर्म रोग की बीमारी बढ़ती जा रही है। पीड़ितों की संख्या राष्ट्रीय मानकों से काफ़ी अधिक है जो कैंसर पीड़ितों की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनसे निपटने हेतु सख्त प्रभावी कदम उठाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के साथ हो रहे स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संतोष कुमार P, नॉट प्रेजेंट। श्री सकलदीप राजभर। माननीय, आपने इस स्पेशल मेंशन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सदन के माध्यम से मैं स्पेशल मेंशन के तहत लोक महत्व के अति आवश्यक विषय को रखते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद बलिया में किसान सहकारी गन्ना मिल रसड़ा, कताई मिल रसड़ा व जनपद गाजीपुर में पूर्वांचल कताई मिल, बहादुरगंज और जनपद मऊ में स्पिनिंग कताई मिल परदहा, स्पिनिंग कताई मिल परदहा में स्वदेशी काटन मिल मऊ उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था। ये सभी उद्यम इन दिनों बंद हो चुके हैं। मिल बंदी के कारण सभी कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। माननीय महोदया जी, मैं इस विषय को सदन में 15/3/2021 को शून्यकाल के तहत उठाया था। यहाँ के गन्ना मिल बंद होने और आसपास कोई दूसरा मिल न होने के कारण यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों के लिए गन्ना की खेती नकदी फसल के समान होता है, जिससे किसान अपने बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह तथा अन्य प्रयोजन के लिए करते हैं। लेकिन गन्ना मिल बंद होने से यहाँ के किसान गन्ने की खेती ही बंद कर दिए। इन सभी मिलों को चालू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 873 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, लेकिन यह राशि अभी तक रिलीज नहीं हुई। अतः आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सभी मिलों को चालू करने में आर्थिक मदद करें और राज्य सरकार को भी स्वीकृति राशि निर्गत करने के लिए आदेशित करें। तथा इसके अलावा मेरा सुझाव है कि अगर उक्त मिलें चालू नहीं हो पाती हैं तो ऐसी सूरत में उक्त मिलों के भूमि पर सक्षम व्यापारियों को उपलब्ध कराकर व्यवसायिक केंद्र बनाया जाए, जिससे उन जिलों के गरीब जनता को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जयंत चौधरी, नॉट प्रेजेंट। श्री ब्रिजलाल। श्री ब्रिजलाल जी जी। Thanks, Vice Chairman, Chairperson, Madam, for giving me opportunity to speak on my special mention. My subject is demand for removal of restriction on movement of four-wheelers on Indo-Nepalese border Aligarhwa checkpost. It has been ascertained that there is an Indian checkpost at Aligarhwa, Siddharthnagar district, UP, on the Indo-Nepal border on the Indian side, and similarly on the other side there is a Nepalese checkpost.
it has been noted that only two-wheelers can ply between these two checkposts. In the absence of movement of commercial vehicle, trade does not take place due to these vehicular restrictions. These restrictions cause negative economic development of this area. It is also to be worthwhile to mention that earlier bullock carts used to ply on the route before these restrictions came in force, and usual commercial activity were going on unhindered. I urge through you to Honorable External Affairs Minister to make effort to remove restriction on the movement of commercial vehicle between these checkposts. This gesture will improve the economic life on the people of the area. Thanks, madam. Thank you. Sri Hise Lachungpa, not present. Sri Bhubaneswar Kalita. Thank you, Madam Vice Chairperson, for giving me the opportunity to raise a very important issue on health, of all of our health through special mention, and my subject is need to adopt front of the pack labeling regulations, ensuring warning levels on high fat, sugar and salt foods. Madam, India is facing a huge burden of diseases such as diabetes, heart diseases and cancers. 1 out of 4 adults in India is either diabetic or pre-diabetic according to the latest study. These diseases are responsible for more than 60% of the total deaths in the country, and many are preventable. One of the major reasons of rising number of diabetes and other diseases is because of increasing consumption of junk food, high fat, sugar and salt foods and beverages according to WHO scientific studies. In India, the sale of such unhealthy foods is growing by 19% annually. Sales of food and beverages are shrinking in the West, and companies are descending into emerging economies and targeting vulnerable populations and the children. India needs to come up with strong front of the food pack labeling policy on HFSS foods that can reduce their consumption. The WHO has recently called upon the governments to formulate strong policies that would decrease the consumption of such unhealthy foods. One such FOPL policy is to mandate warning labels as FOPL on HFSS foods that are already defined in the draft regulation. The WHO SARO's thresholds can be used too. This is the only policy that works and is backed by the global and national evidence. I urge upon the government to urgently adopt strong FOPL regulation to ensure mandatory warning levels on the high fat and sugar salt foods. India can demonstrate global leadership to protect its people from harmful HSF marketing like effectively done in the case of marketing baby foods and tobacco. Through you, Madam, I request the government, demand the government to take appropriate action on making strong FOPL regulations, ensuring high-fat, sugar, salt foods, and do whatever is necessary. And I would have been present if Health Minister was present here today, because this is a very important subject affecting everyone's health. Thank you, Madam. धन्यवाद. Sri Gulam Ali.
Thank you, Deputy Chairperson, ma'am. This is to bring to your kind consideration that certain taxpayers are facing some income tax related hardship on account of non-deposit of tax deducted at source to government account, why tax deductors, which does not come to the notice of Central Processing Center of the Income Tax Department. And when the SSC approaches the jurisdictional income tax officer with such problem, the jurisdictional officer expresses his inability to take any action against the defaulters, claiming that income tax officer cannot do unless the same comes from CPC. In one such instance, the TDS of a taxpayer was deducted by a government corporation, Jammu Municipal Corporation, but does not deposited during the relevant year in Jammu and Kashmir. The SSC had offered his correct income for tax to the Income Tax Department and calculated proper taxes. Credited to TDS was not received on account of non-deposit of the tax deducted by the deductor. As a result, the department served the person demand notice of the amount of tax which was deducted out of the income of the person, but was not deposited by the said government corporation during the relevant year. Same may be done with the other SSC by various departments, corporations across India. I therefore urge through you to government to seek data on such complaints and redress them. Thank you. धन्यवाद. श्री अयोध्या रमी रेड्डी अल्ला. Thank you, Madam. This is an important subject on coal during high electricity demands being burnt. Madam, based on government data, Reuters reported that India experienced its most substantial growth in power generation in over 30 years during the previous fiscal year, with coal-fired plants recording a 12.4% surge in electricity production, leading to a notable rise in emissions. The surge in power demand, driven by intense summer heat waves and other contributing factors, compelled India to boost its power output from both coal and solar facilities to avoid power shortages. Indian power plants in the new fiscal year are expected to burn about 8% more coal, according to the report. The rapid acceleration in India's coal-fired output to address increased power demand remains a significant hurdle, as we have committed to reducing our carbon emissions. As climate change is likely to accelerate the impact of heat waves, addressing increased electricity demands while also reducing the share of coal in power mix will be a recurrent challenge and must be tackled effectively. Therefore, I request the government to take measures towards renewable energy diversification and increasing the renewable energy generation capacity to tackle the increased power demand. This would ensure we stay on the right path regarding our sustainable development commitments and successfully end our coal dependence. Thank you, Madam. Thank you. Sri GVL Narasimha Rao. Thank you, Madam. My special mention is about the need to establish a National Building and Construction Workers Fund by amending the relevant acts. As per, Madam, as per the Building and Other Construction Workers Act, 1% cess is collected by the labor departments of state governments from builders of construction projects. The money so collected is to be transferred to state construction workers boards for the welfare of the workers. As high as 5.06 crore building and construction workers are registered with various state construction workers boards. They are entitled to receive several welfare benefits for educational assistance, marriage, maternity benefits, medical assistance, death in family for differently abled members, and for housing grants.
Several lakhs of such claims are pending in state workers' boards, though their state governments have thousands of crores of collected funds lying unutilized. The central government has asked the state governments repeatedly to use these funds during the COVID period, but in vain. I appeal to the government to amend the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 and the Building and Construction Workers Act to establish a national construction workers fund from the cess collected under these acts and distribute the same to workers via DBT, direct benefit transfer mode, as in the case of other central schemes like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 9th August 2023. Investigation team. Sir, the Chief Minister of the state of Manipur, Biren Singh, when the incident of naked parade of two sisters have come out in the viral video, what was his reaction? When it was being, when the press people has asked about the response of the Chief Minister of the state, what he has said, we are having more than 6,000 FIR has already been registered. We are not in a position to say what happened to it, what is the stage of investigation. Such an irresponsible reply from the state chief, that is the Chief Minister of the state of Manipur. That is the thing which has happened. That is why the Supreme Court, the House, the people at large have lost the confidence in the state administration. That is a definite fact. Sir, on May 4th, this naked parade of these two ladies have took place. When the FIR was registered, the FIR was registered only on 17th of May. That is, after 14 days only the FIR has been registered. These two girls or these two ladies were captured from the police custody. And the police is well aware of the incident. Even after the police is not ready to take an FIR, and the FIR which was taken on 17th of July was a zero FIR was lodged. And subsequently, when the arrest was took place, that was on 20th July, when the naked video was become viral, the thing has become viral in the social media as well as in the public. Only after that the first person is arrested and 4 other persons are arrested. That means madam was just now telling that why the video has been circulated. Suppose the video has now come into the public domain, it is definite that none of them would not have been arrested because of the attitude taken by the state government.
Sir, how the people of Manipur will rely on such a chief minister? He is still continuing in power and he is still enjoying the power, and the people have lost the confidence on the chief minister, but it is quite unfortunate. That is why I am saying that three major measures taken by the or adopted by the Supreme Court to appoint a women judges panel to look into the relief and rehabilitation, an investigation of the CBI being monitored by a Director General of the Police of the Maharashtra, retired DGP, and also 42 police officers outside the state of Manipur will be part and parcel of the 42 special investigation teams. Sir, what does the Supreme Court decision indicate? So both the governments at the center and the state are miserably failed in dealing the Manipur situation, in restoring peace and maintaining law and order situation in the state of Manipur. Sir, it proves that the constitutional machinery of the Manipur state is totally collapsed. According to me, it is a fit case for dismissal of that government by invoking Article 356 of the Constitution, but I do not support 356. We are against the 356. Therefore, I appeal to the Honorable Prime Minister, to the Government of India, to the BJP leadership, remove that Chief Minister at the earliest. At least that should be done from the part of the political leadership. Why you are still maintaining him? That means you are indirectly supporting the Chief Minister. That means you are indirectly supporting all the actions taken by the Chief Minister and the particular state government. Why he is still there? He has made a drama of resignation. We have all seen. I am not going to it. So the highest court of this land is fully ratifying the no confidence motion moved by the India Alliance. That is absolutely there. Today also morning, Nishikant Dubey was talking about this is an unnecessary motion being moved. But the Supreme Court says the constitutional machinery of the particular state is collapsed. And the next responsibility is with the union government. It is quite unfortunate to say that the union government is not in a position, is not empowered to take any action on the state of Manipur. Even after the collapse of the constitutional machinery in the state, 160 people have been killed. Thousands of people have been hurt, injured, and 65,000 people of Manipur has already been in rescue camp and shelters. And thousands of houses were burned. People are in the relief camps also. The pathetic situation, the relief camp also, it is very, very pathetic. In such a situation also, suppose the union government, the government of India is not taking any proactive measures to look into the affairs and to combat and to restore peace, then what is the responsibility and accountability of the union government as far as this issue is concerned? That is the pertinent question. That is the reason by which we have given a notice of confidence motion. Sir, in this background, I do urge the government to take the following immediate measures. Number one, I have already stated that to replace the Chief Minister with immediate effect. Sir, number two, send an all-party delegation to the state of Manipur under the leadership of a cabinet minister. If it is possible to have the Home Minister. And number three, sir, convene an all-party meeting to be attended by the Prime Minister to find out a political resolution to the basic issues of Manipur as well as the Northeast. And four, rehabilitation and relief measures have to be strengthened and expedited on the auspices of the Government of India, Union of India. You cannot rely upon the state government. The Union of India has to step into the shoes of the state government to expedite the rehabilitation and relief operation in the state of Manipur. And five, sir, it is very, very important that initiate proactive action on the part of the Government of India and the political leadership to build up the confidence building measures, because the people of Manipur, now an internal war is there. So internal war between two sects of the society, I am not naming anyone. In such a situation, the confidence building measures, we, the entire political parties, the government, we are all with the people of Manipur. We have to restore peace and tranquility in the state of Manipur, for which an all-party meeting has to be convened and political resolution has to be adopted. These are the points which I would like to highlight on the part of this Manipur issue. Sir, as far as other issues regarding the economic scenario of our country, because this is a no confidence motion, so the economic situation of the country has gone from bad to worse over the last 9 years. So the reckless decision on demonetization and hasty implementation of GST have broken the backbone of our economy. The agriculture sector is in total turmoil.
Sir, with the highest ever recorded 8% unemployment growth and price rise has created unrest among the common people. Sir, 8% of unemployment growth rate is all the universal record as far as India is concerned, because such an unemployment growth is affecting the whole country, especially the educated youth. So our country cannot continue to live with this kind of irresponsible, insensitive and inefficient government longer. It is very difficult to survive with this government. So it is the right time to make the government accountable to the people through the House of People, for which no other better way but to vote against the government and pass this motion on the floor of the House. Sir, the House of People, Lok Sabha, is the representatives of the people directly elected from the people, the House of the people, the Prime Minister, the ministers, the government is directly responsible. Pardon, sir? करने के लिए वोट इकट्ठे करने पड़ेंगे. Certainly, sir, certainly. So my point is, sir, the House of the People is the right forum by which the government can be made accountable. So my submission is, there is no other option as far as opposition is concerned to vote for this no confidence motion, by which the government have to be made accountable. With these words, once again, I stand with India Alliance. Sir, India Alliance, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. Sir, we are yes, I'm concluding. Sir, we are transforming National Democratic Alliance, NDA, into India. That is the difference. We are making NDA into India, and for which, sir, the no confidence motion, I strongly support and stand with India Alliance to support this motion. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 9 अगस्त 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
सुशासन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपनी दूरदर्शिता, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर नए भारत के विकास की नई गाथा लिख रही है। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिनव पहल। देश आज विकास की ऊंची उड़ान भर रहा है और किसी भी देश का विकास उसकी रफ्तार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर निर्भर करता है। आज दुनिया के तमाम रेटिंग्स पर अगर नजर डालें तो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साथ ही बाकी देशों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स संबंधी रेटिंग बेहतर हो रही है और इसके पीछे की बड़ी वजह है बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जाना। और इसी दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर है पीएम गति शक्ति योजना। इस पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को इनोवेशन सेंटर की श्रेणी में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। एक तरह से देखिए तो पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन के समय और लागत को कम करके तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें सरल बनाकर एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के जरिए लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करना है कहीं ना कहीं। यानी ये मास्टर प्लान देश भर में निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देकर परिवहन लागत में कटौती करने के लिए लाया गया है, जिससे लास्ट माइल डिलीवरी में तेजी लाई जाएगी और समय और धन की बचत होगी ताकि देश की आर्थिक गति को बड़ा सहारा मिले। इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 30 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय और विभाग साथ ही काम कर रहे हैं। एक तरह से 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अभी परिवहन के साधनों और अलग अलग विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच समन्वय की कहीं ना कहीं कमी दिखती थी, लेकिन गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर कर रही है। आखिर क्या है गति शक्ति मास्टर प्लान और कैसे मुमकिन हो रहा है गति शक्ति को पूरा करने का सपना? क्या है इसके पीछे का बड़ा विजन, उद्देश्य और कितना क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा ये प्लान? कैसे मंत्रालयों के बीच का समन्वय इसे दे रहा है तेज रफ्तार? क्या रही है इस बीच चुनौतियां और क्या रहे हैं उससे निपटने के उपाय? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में समय मौजूद हैं। मेरे साथ सुमिता डावरा जी हैं जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स हैं। सुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे साथ हैं डीके ओझा जी जो कि उप महानिदेशक हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हैं नीरज कुमार जी जो कि उप महानिदेशक हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन में। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों के साथ बातचीत को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं गति शक्ति नेशनल का पूरा प्लान। पीएम गति शक्ति विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का एक ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। इससे इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग एवं सिंक्रोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन संभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंस्पिरेशन दिया उससे पीएम गति शक्ति कंसेप्ट पर काम शुरू हुआ। 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अनावरण किया गया। PM Gati Shakti is a game changer which envisages the mapping of the GIS data layers of all the ministries, states and UTs in the country. Hence, it is a challenge to make sure that the data is mapped. The data should be quality data, authentic. And today we have a national master plan in place which is being effectively used for planning comprehensively multimodal infrastructure connectivity in the country. पहले जब विभाग अलग अलग सैलोज में काम करते थे तो एक कोई तरीका नहीं हम साथ में काम कैसे करें, पर एक ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मिल गया। एक NHAI की सड़क के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है,
वहीं से एक गैस की पाइपलाइन डाली जानी है, तो उसी सड़क के जो अलाइनमेंट है उसको उपयोग करके गैस की पाइपलाइन डाली जा सकती है। लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बच जाती है। या इस जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाए तो उसकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। गति शक्ति पोर्टल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे लेयर एक साथ उपलब्ध हैं। इससे प्लानिंग काफ़ी फास्ट हो गई है और टाइम और कॉस्ट में भी काफ़ी सेविंग हो रही है। PM Gati Shakti National Master Plan is actually helping us getting our projects sanctioned at the earliest, then getting them implemented on the field is easier because now they are being monitored in real time by the divisional Gati Shakti units. विकसित भारत के जब सबकी तो आइए इसी को लेकर करते हैं चर्चा। सुमिता जी, पहले मैं आपसे बातचीत करूंगी। नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर इसे कहा जा रहा है। हम जब देश को ग्लोबली देखें तो इस समय $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025-26 तक, 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। PM गति शक्ति योजना की जब बात होती है, इस पूरे प्लान की बात होती है, ये कितना बड़ा मददगार और गेम चेंजर साबित हो सकता है इस दिशा में? जैसे आपने कहा, हमारा अभी जो ऑब्जेक्टिव है 2047, जब हमारे 100 साल इंडिपेंडेंस के हो जाते हैं, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का विजन है कि तब तक इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा। तो डेवलप नेशन में हमारा GDP उस समय $32 ट्रिलियन से अधिक का अनुमान है। तो ये GDP अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें तो इस वक्त हिस्टोरिक लेवल पर आउटले है। इस साल के बजट में जैसे आपने देखा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने हिस्टोरिक लेवल 10 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसमें रोड, रेलवे, पोर्ट्स, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, पावर सब आ जाते हैं। और राज्यों के लिए जो गति शक्ति का आवंटन था वो भी दुगना कर दिया गया। यस, वो भी दुगना कर दिया है। तो अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए और उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट पूरा ऑप्टिमम वे में होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, जो कि जैसे आपने कहा अक्टूबर 21 में लॉन्च हुआ, जिसमें एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। और वो क्या है, ये क्या है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसका लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने करा। इसमें GIS लेयर्स, हमारे जियो स्पेशियल लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की मैप हो गई हैं। तो चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो या वो रोड नेटवर्क हो या टेलीकॉम का हो या पावर का हो या पेट्रोलियम नेचुरल गैस की पाइपलाइंस, सभी मैप हो गई हैं। और अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो सब इसी के ऊपर मैप हो रहे हैं। और ये मैप करने के लिए हम टूल्स और एप्स बनाते हैं। हमने 1450 से ज़्यादा GIS लेयर्स, डेटा लेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ की और सभी स्टेट्स की और UTs की, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एरिया, ये सभी आ गए हैं पोर्टल पर। अब पोर्टल पर आने से क्या फ़ायदा होता है, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच हो जाती है। आज अगर मैं रेलवे मिनिस्ट्री से एक रेलवे लाइन प्लान कर रही हूँ तो मुझे सभी इंटरसेक्शंस GIS प्लेटफॉर्म पे दिख जाती हैं कि सड़क कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन, मेरा फॉरेस्ट एरिया, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स किधर हैं और स्कूल्स किधर हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किधर हैं। तो मैं ये सब अपने पर्सपेक्टिव में रख के वो रेलवे लाइन को ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं मैक्सिमम कनेक्टिविटी दूँ सभी इकोनॉमिक सेंटर्स को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एरिया डेवलपमेंट हो जाए। और इसके लिए मुझे जो हमारा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको भी मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फॉरेस्ट एरिया दिखता है। और मैं अपनी अलाइनमेंट कैसे करूँगी, अपनी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कैसे प्रमोट करूँगी ताकि सड़कें रेलवे लाइन से जुड़ें, रेलवे लाइन हमारी पोर्ट्स के साथ जुड़ें, और ये सब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी लाने के लिए ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म बना है। और इसका अब हम बहुत ही बड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक विजन से मिशन मोड में आ गया है। ठीक है, ठीक है। DK ओझा जी, जैसे मैम ने भी बताया और हम जानते हैं कि तमाम मंत्रालय और विभाग इसके अंतर्गत समन्वय करके काम कर रहे हैं।
अगर मैं आपके मंत्रालय के लिहाज से समझूं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के लिहाज से, आपके नज़रिए से ये गति शक्ति क्या है? जैसा मैडम ने अभी बताया कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है और जीआई जो हमारी पीएम गति शक्ति है, ये केंद्र और राज्य संबंधों के मजबूत और परस्पर कोऑर्डिनेशन के विषय में है। मैडम, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, जितने मंत्रालय प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सबका डेटा इस पर मैप्ड हो गया। तो हमारे लिए उन डेटा को यूज़ करके अपने रिसोर्सेज जो मेरे पेट्रोल हैं, गैस हैं, इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी या जहाँ तक मुझे ले जाना है सोर्सेज तक, वो बहुत आसान हो गया। अब हम इस गति शक्ति के पोर्टल के माध्यम से यह देख सकते हैं, जैसे मैडम ने भी कहा, कि मेरे कनेक्टिविटी कहाँ आ रही है, क्रॉसिंग परमिशंस कितनी रिक्वायर्ड होंगी, पाइपलाइन अगर मुझे ले करनी है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन तो मैं कहाँ से ले जा सकता हूँ, इकोलॉजिकल बैलेंसेस मैं कैसे देख सकता हूँ। तो मेरे लिए ये परस्पर कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम करने में बड़ा आसान हो गया। मैडम, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसा भी मैडम ने कहा कि रोड बनते समय हम पाइपलाइन भी डाल सकते हैं, तो बॉम्बे में हमारा एक समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसमें MSRDC, मुंबई स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने जब रोड बनाया मैडम, साथ में हमें यूटिलिटी कॉरिडोर भी दिया जिसमें हमारी गैस पाइपलाइन सड़क बनने के साथ साथ हम डाल पा रहे हैं। इस गति शक्ति का बहुत बड़ा उपयोग हो गया, प्रयोग सामने दिख गया मैडम। अभी ये बहुत पुराना नहीं है पूरा पीएम गति शक्ति, लेकिन इसके जो आउटपुट है मैडम, ये सामने दिख रहे हैं, हमें बड़ा फायदा हो रहा है। बिल्कुल। नीरज जी, आपके नज़रिए से अगर समझे, जैसा हमें अभी सुमिता जी ने भी बताया कि मैपिंग हो पाई, ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कदम रहा है और इंफ्रा प्लानिंग का रास्ता सभी को कहीं ना कहीं गति शक्ति ने दिखाया है। अगर मैं दूरसंचार एसेट्स को मैप करने की बात कहूँ तो वो किस तरह से किया गया इसके अंतर्गत? जी देखिए, जो टेलीकॉम की जो मेजर एसेट्स हैं वो हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स। तो हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे जैसे BSNL, BBNL, MTNL, गेल और पावर ग्रिड जो थे, तो इनका करीब हमने 12 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल GIS कोऑर्डिनेट के साथ पीएम गति शक्ति में मैप कर दिया है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की PSUs थी वो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल डालती थी, तो उनका करीब 21,000 रूट किलोमीटर हमने मैप कर दिया है। इसके अलावा हम जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम उनसे संपर्क में भी हैं और उनका भी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको भी पीएम गति शक्ति पर लाने की मुहिम चल रही है। तो धीरे धीरे सारे देश का ऑप्टिकल फाइबर केबल इस पे आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे देश में पूरी 7.5 लाख टेलीकॉम टावर्स हैं उसको हमने इस पे मैप कर दिया है और हर एक टावर के ऊपर करीब 3 से 4 एंटीना होते हैं, तो करीब 25 लाख उनको एंटीना को हम BTS कहते हैं, तो 25 लाख BTS हमने पीएम गति शक्ति पर अंकित कर दिए हैं। इसके अलावा जो पीएम वानी वाईफाई हॉट स्पॉट्स हैं करीब 1.45 लाख हैं, उसको भी हमने इसके ऊपर मैप कर दिया। ठीक है। और सुमिता जी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है 30 से ज़्यादा मंत्रालय और विभाग, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, जाहिर तौर पर जो वर्किंग मेथडोलॉजी है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? अब ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है और सभी मंत्रालयों को ये कॉन्सेप्ट एक तरह से डीमिस्टिफाई कर मोटिवेट कर उनको ऑन बोर्ड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है उसमें सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम शुरू करा और उसमें हमारी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के साथ अब काम बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है। पूरा डेटा मैपिंग, पूरा यूजेज, और कोई सैंक्शन नहीं बड़े प्रोजेक्ट को मिलता जब तक वो गति शक्ति के हमारे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के सामने असेस नहीं हो जाता। अच्छा। और उसके अलावा फिर इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी, फिर हमारे सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्रीज़ जो जुड़ी हैं, वो बहुत ही दिलचस्प काम इस वक्त हो रहा है जिसके अंदर सभी सोशल सेक्टर की 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स सभी मैप हो गए हैं, स्कूल्स मैप हो गए हैं, हॉस्पिटल्स, और इस तरह से हमारे ट्राइबल विभाग के जितने भी एसेट्स हैं, इस तरह से हम कंसिस्टेंटली मंत्रालयों को जोड़ रहे हैं। तो अब हमारे पास सोशल सेक्टर के 22 मिनिस्ट्रीज़ जुड़ गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि कुछ पहले शुरू हुआ और सोशल सेक्टर की भी मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी, तो कुछ काम आगे बहुत अच्छे से बढ़े हैं और हम उसी को शोकेस करके बाकियों को भी इनकरेज करते हैं। और इसी तरह हमने स्टेट्स को 36 स्टेट्स और यूटीज़ को लाना भी हमारे लिए बहुत सरल काम नहीं था, पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसमें जो इंटरेस्ट लिया है और सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं, चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसका जो हमको बहुत एक एडवांटेज मिला है
उस पर हमने लेवरेज करा है और सभी स्टेट्स और यूटीज़ का भी इस वक्त देखें तो यूजेज बहुत बढ़ गया है। और स्कूल्स, नया स्कूल कहाँ लगाना है जिससे हैबिटेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, कौन सी दूर की हैबिटेशन है जहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए सड़क चाहिए। और जैसे नीरज जी का ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इन्होंने गति शक्ति के ऊपर देखा कि हमारे 30,000 हैबिटेशंस में 4G का सैचुरेशन अभी करना है। वो काम इन्होंने शुरू करा गति शक्ति के पोर्टल पर देखकर। तो इस तरह से जो कॉमन पर्सन है, आम आदमी है, ईज़ ऑफ लिविंग के लिए स्कूलों की कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल्स की, आंगनवाड़ी की, ये काम भी बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें स्टेट्स ने और सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत इंटरेस्ट लेके इस काम को आगे बढ़ाया है। ठीक है ओझा जी, पीएम गति शक्ति योजना जिस एम, जिस विजन के साथ लाई गई और काम कर रही है, आपका जो मंत्रालय है पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, उसने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए इसके लिए ताकि वो विजन पाया जा सके जल्द? जी मैडम, सबसे पहले हम लोगों ने इस पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को समझने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया मंत्रालय में। और हमारे पास एक 5 सदस्यीय टीम है जो पूरे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को मिनिस्ट्री लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम हमने किया मैडम कि हमारे जितने भी एसेट थे, जैसे मेरे रिटेल आउटलेट्स हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइंस हैं, इन सब का हमने मैपिंग कर डाला पीएम गति शक्ति पोर्टल पर। तो 1 लाख से ज़्यादा हमारे एसेट्स उस पर आ चुके हैं मैडम, जिनसे कि अब हमें सब दिख रहा है कि हमारे कौन से एसेट कहाँ पर हैं। तीसरा, जैसा मैडम ने कहा कि हम लोग एक पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत किया मैडम। डीपीआईटी ने 5 रीजनल वर्कशॉप ट्रेनिंग कराए थे जिसमें सभी स्टेट्स को और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड किया। उसका हमने बड़ा फ़ायदा लिया। तो एक पीयर ग्रुप लर्निंग हमारे लिए रही जिस पर हम आगे बढ़े। हमने मैडम अपने लिए MOPNG के लिए यूज़र मैनुअल बनाया कि हमें क्या क्या करना चाहिए पीएम गति शक्ति पर जाने के लिए, उसके मैक्सिमम उपयोग के लिए। तो एक SOP ड्रॉ किया। तीसरा, एक और बहुत काम किया हमने कैपेसिटी डेवलपमेंट किया मैडम। जितने भी हमारे यूज़र थे जो एक्चुअल यूज़ करने वाले थे, उनकी सबकी हमने ट्रेनिंग कराया। इसके लिए जो नोडल एक हमारा टेक्निकल पार्टनर है बाइजग एन गांधीनगर में, उनके यहाँ भेज करके लगभग हमने 200 लोगों को वहाँ ट्रेनिंग कराया। तो एक पूरा जो हम कॉन्सेप्ट हमने समझा था, मैडम के साथ जाते हैं, मैडम हमें समझाते हैं, हम नीचे समझाते हैं, तो एक पूरा हमने चेन बना करके मैडम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल तक ले गए। और लास्ट में जो हमारा काम था कि हम नया फ्यूचर प्लान जो भी कर रहे हैं, रूट अलाइनमेंट कर रहे हैं, उसको अपने पीएम गति शक्ति पर प्लान करके, मैप करा के, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में हम अपने प्रोजेक्ट्स ले गए जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स थे, उस पर डिस्कशन किया। तो वहाँ पर हमारे 8 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट मंत्रालयों से हैं। उनका सबका सहयोग मिल जाने से उन सब की जो कमेंट्स थे हमने अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लिए और वो प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो पाया। ठीक है, ठीक है। और वहीं नीरज जी, जब आपने बताया कि दूरसंचार एसेट्स को मैप किया गया, पीएम गति शक्ति के लिए इसके फायदे क्या रहे हैं इस मैपिंग के? प्रीति, देखिए, एक बार हमने टेलीकॉम एसेट्स पीएम गति शक्ति में मैप कर दी तो हमारे जो सेलर थे जिनका ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड बिछा हुआ था और कुछ कंपनी का एक्स्ट्रा था, जैसे कि भारत नेट ने भी बहुत सारा फाइबर डाला हुआ है, तो वो एक सेलर थे। और जो हमारे खरीदार थे जिनको कि अपनी टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना था, तो उनको हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो अब जहाँ पर सरप्लस है किसी कंपनी का, तो वो दूसरी कंपनियों को उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारी टेलीकॉम टावर्स जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड नहीं थी, उनको निकटतम ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना आसान हो गया है। और एक बार हमारी जो टेलीकॉम टावर हैं जब ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ पर मोबाइल का सिग्नल बेहतर हो जाता है। और मोबाइल का सिग्नल बेहतर होने से हमारे जो आम नागरिक हैं उनको बहुत सुविधा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार अगर किसी भी क्षेत्र में ये जानना चाहती है कि यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है, तो वो इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए देखा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी की क्या स्टेटस है। और ये जानकर सरकार या कोई भी बिजनेस है वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाएं कि न लगाएं, अगर लगाएंगे तो हमको क्या टेलीकॉम कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि सोशल सेक्टर की भी मैपिंग हो रही है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, तो इनको अगर हमको टेलीकॉम कनेक्टिविटी देना है तो इनके पास भी जो निकटतम ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कितनी दूर है, और वहाँ से लाने में सपोज फाइबर टू होम हमें देना है तो कितना खर्चा लगेगा। अगर ज़मीन का भी उसमें कच्चा और पक्का का विवरण है तो हम एक प्रोजेक्ट का डिटेल DPR बना सकते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, और एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमको अगर कहीं कनेक्टिविटी देना है तो किस प्रकार का खर्चा लगेगा। ठीक है। और सुविधा जी, अगर देखा जाए तो
इस पूरे योजना का मकसद यही है कि देश में कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार किया जाए। और जब हम इस योजना की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो लॉजिस्टिक्स नीति अब आई है नई, उसकी बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कितनी मददगार है पीएम गति शक्ति के लिए, और क्या हम कह सकते हैं कि देश जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम को रन कर रहा है उसके लिए हम एक आइडियल ट्रैक पर हैं क्या? ओके, अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लॉन्च करा लास्ट ईयर सितंबर 2022 में, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक था कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव रहेंगे। दूसरा, जो हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग करता है, जिसमें अब हम 139 कंट्रीज़ में से 38 पोजीशन पर आ गए हैं, हमारे 16 पोजीशंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। तो उसमें हम टॉप 25 कंट्रीज़, टॉप 25 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 2030 तक हो जाएंगे। ये हमारा